I also say the same thing. My antenna also used to rise. But then, in ancient India, Jyotish had two parts: Ganit Jyotish and Falit Jyotish. Ganit Jyotish is translated as astronomy. Falit Jyotish is the Jyotish which we say impact on individuals. There we had no role to play. So this book does what? We take Ganit Jyotish references from this book. And then each of those verses, translational disputes were resolved through the Sanskrit scholars and Sanskrit dictionaries. Just two translation corrections in ancient, very ancient texts, when they did not even know the modern science much, were put the whole Mahabharat line, date line in place. I will come to that. So let me first be clear. I will be very short now. I have given the background. One is references to planetary positions. Number two, a perfect translation of those verses. Number three, those planetary positions, looking them in the sky through planetarium software, which is a popular software, and then verifying them through stellarium software, which is a NASA ephemeris software. And then once the date line is set, I think this is the most credible date line, because humans have not so far learned to tinkle with the movement of stars and planets. They cannot change. What is important is that once those date lines are set, next, what are the supporting evidence? Most important, of course, is archaeology. Archaeology, you can raise dispute even 500 years back whether below Babri Masjid there was a temple structure or not. How many years we have fought over this? But then, the misfortune of our country is, when I went into correlating the archaeological evidence, I was very clear that I will not use secondary sources. Secondary sources nahi. ओरिजिनल आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट ही ली जाएगी और उन्हीं रिपोर्ट से आगे देखा जाएगा, या ओरिजिनल आर्कियोलॉजिस्ट जो है उसकी रिपोर्ट ली जाएगी तो उसको कोरिलेट किया जाएगा. And I found what large number of archaeological reports of last 40-50 years are there with Archaeological Survey of India, and their reports being published in a Puraptatva by Indian Archaeology Society, that we are not adding them to our school college syllabus. That only governments know. I do not know why. But I got all those reports in my possession. I will get them issued for a day, and without any hesitation, I'll get the copy done and made my library. Big library I made of these reports which were relevant. And I was amazed that what a reconstruction of history these do. And then, of course, we went into paleobotany, what are the plants mentioned there. And when they were found in India as per the carbon C14 dating of excavated materials. Then I even went into oceanography. If there are oceans or seas referred, what were their water levels and whether they support the references in Mahabharat. Earlier I did for that for Ramayana. Then we went into remote sensing. Jodhpur ISRO Center does remote sensing of paleo channels of ancient rivers, which might have dried up, but under the earth they will show the color, and they can trace the route through remote sensing. So even I went into genetic studies, and every time the methodology was take the reference from Mahabharat, then see that particular plant or metal or terracotta or whatever item, or when did that this is what is the carbon dating, whether it existed on the dates when Mahabharat sky views were seen. Like that it went, and everything like automatically was supporting each other. Automatically, not much effort had to be made. And finally, through 7 different scientific disciplines, we concluded that Mahabharat War was fought in 3139 BC, which means 3139 BC is the astronomical year, because the software gives you this year. And then
Zero year is not taken into account by computer. So historical year will be 3140. This that I want to clarify. But everywhere I will refer to astronomical year, because every time saying this is the astronomical year, this is historical, is very boring for the listener. So with that, the question was not only determining the dates. Question was, if Mahabharata is a mythology, from where did Bhagavad Gita come? And what is the profound philosophy of Bhagavad Gita, which is passed on to us? And what had happened prior to Mahabharata? What had happened thereafter? And has that civilization come to an end sometime? And has that civilization or culture continued? And what are the lessons we learn? All these were within the purview. Very short, I will go now to how, when you determine, I say that when we determine, there were, first of all, I sat down with the dating done by other scholars. Whoever had used the software, most of them have used Planetarium. Stellarium so far has not been used much by, that's a very, very precise software, because it is released by NASA on NASA FMS. Now, I went into all of them with the utmost respect, because I am not an astronomer. I have a political science and LLB background. But I went mad with the obsession that I must determine the scientific basis. And once you become so passionate about the thing, you can always do something about it. So I kept on learning from the greatest scientists on every subject, inviting them on seminars, conferences, taking their paper, and then boring it. When I found and verified the dates done by eminent scholars like Narhari Acharji or Ashok Bhatnagar ji or Iyengar ji or Nilesh ji, I have just attached, because I have no issue with anyone. Every scholar is great. I respect all of them. I have just given an annexure to my book, where and how their dates either do not tally with the Mahabharata reference, or they do not show the sky view they are wanting to show. So those dates don't seem to be precise. And in any case, sequentially they are not precise. Certainly, they can't take the liberty of changing. Almost all of them are either discarding very important verses of Mahabharata as irrelevant, or they are changing certain language. Like somebody said, instead of Uttar Bhadrapad, I will take Uttar Falguni. How can you do like this? You cannot do this. Now, with all this, I found I learned more and more. Most of them I have invited them on my forum, learned from them, and then came to what should be the precise, a comparatively more foolproof method. Because until you give the entire sequence and the entire sequence falls in line, an isolated verse may not give you the correct picture. Now the question is that what I said is, whatever is the sky view right now outside will not repeat in 25,920 years. That will happen only when all the 6, 7 planets positions are given. If they are only 4 or 5 given, or 1 or 2 are given, you cannot. So my first search was in Mahabharata to know which are the verses which can give me position of all 7 planets, or they can give me certain big marker that on Markshish Saptami, the sun started its northward movement when Bhishma Pitama decided to go to the heavens, depart from the world of. So these were the 2 markers. If you can locate these, then you could verify all of it. So now I start with the first how. First thing I did is, when Pandavas, we all know a short history of Pandavas called Pandu is the younger brother, Dhritarashtra is the elder who is blind. Therefore, Pandu becomes the king. But Pandu mostly leaves Dhritarashtra is not happy. Pandu mostly leaves the rule to Dhritarashtra.
and goes either to forest or goes either to win wars. And Pandu is blessed with 5 sons, and the eldest one is Yudhishthira, you all know. And then Dhritarashtra has 100 sons. Duryodhan is the eldest, very ambitious, very vicious also, and always fighting and wanting to show down Pandavas. The only fault of Pandavas were that they were very noble, they were very brave, they were very accomplished, and this was intolerable to Duryodhana. So this is how the whole war story started. And then when an attempt was made to kill them in Lakshadweep, they didn't die, they escaped. An attempt was then after their, everything, then they are sent to, which they call later on in the press, that forest area, that they should develop their kingdom there, they develop that. And then they are invited for a game of dice, mischievous game of dice, with the intention of cheating them and cheating them of their kingdom. When they lost everything in the game of dice, and then they decided to go to forest for 12 years and 13th year of incognito living, then there is a mention by Vidur to Dhritarashtra as they are departing. There is a solar eclipse. And this solar eclipse you could see in 3153 BC on 14th November, I suppose. I can still look at that. Then 12 years passed, 13th year they lived in Viratnagar, and in after the end of 13th year, Duryodhan refuses to honor the wager of the game. He was supposed to give back their kingdom to them, but he refused. And then the war became imminent. When the war became imminent, all peace efforts failed. Then there are sequential sky references in Mahabharata, very large number. What had happened? That first lunar eclipse happened in the month of Kartik. These are all given where? They are all given in Bhishma Parva, chapter 2 and 3. And these are the verses which needed to be understood, appreciated, and dated. But most of the scholars ignored them. Why? I give just 2 reasons. There is a word used there for the set position of Saturn, Shani, Surya Putra. Now they said Surya Putra kaun hota hai? Surya Putra koi धूमकेतु होगा, हमें नहीं मालूम. We won't do. But then if you go to ancient Sanskrit, Surya Putra is the other name of Shani. Then similarly, Magha or Swa. Magha could mean comfortable also. Magha could mean Magha Nakshatra also. So you just decided you will say Magha Nakshatra and forget about everything. Swa word you will ignore, which was for its own house, because Mars' own house is Aries. So just these 2 corrections in these line of some 20 verses, you will go and reach at precise date of everything. Now, see, this I am giving. There are, let me clarify that every slide, sky view, which is generated by planetarium, stellarium will generate exactly after 26 days, same sky view. It's only the calendrical calculation different. For the lunar date and the position in the sky would be same. Since planetarium software is very user friendly, I can show the colors, I could brighten the names of the positions. So I have used this here. In my book, you will see stellarium as well as planetarium, both. And you will see all verses also translated there, giving the reason why a particular word should mean what. Just 2 corrections were made. Almost all eminent scholars just rejected or ignored these verses, saying that they are not relevant for dating. There seem to be some references to Dhumketus, and right, like as if they believed that 10, 12 Dhumketus would appear in the sky same day. These verses were spoken by sage Vyas to Dhritarashtra when forces had assembled totally on both sides in Kurukshetra. And sage Vyas came to know that war is just going to start.
and he was very apprehensive that if this war starts, it will cause a complete disaster of mankind. So he came to war with Dhritarashtra. If you can prevent this war, please do. Otherwise, this will destroy the entire Guru race. So in this Bhishma Parv, in chapter 3, 14 to 18 verses, you can read in my book the Sanskrit, but Mars is entering its own house in Vakragati. Here is Mars, and this is Aries, and this is Taurus. You all know that from Taurus, Mars will move to Aries. And then, no, sorry, Aries to Taurus, because the whole circle will be completed from Pisces to Aries to Taurus like that. Mars gets into Vakragati also 2-3 days, front and back. That happened. So happens, and this is exactly what the sky view will show. That 2 days earlier, Mars has moved towards Taurus, and then it moves a little back towards Aries and comes back like this. Its in own house, Aries, is entering its own house in Vakragati, moving back from Taurus. Saturn in Scorpius is afflicting 10th constellation, Uttar Falguni in Leo. Now, Saturn is Leo afflicted by Saturn in Scorpius, and this is Saturn. Okay, 10th house. Now there are 12. We all know 12 राशि. That much हम सभी को पता है. हम सभी की जन्म पत्रियां बनती हैं, 10 राशियां होती, 12 राशियां होती हैं, और 12 राशियां 2-2 घंटे में ऊपर जाती है, एक राशि एक होराइजन से नीचे आती है, तो इस तरह चलता है. That is why एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन इतनी परफेक्ट है कि या तो आप साल, महीना, दिन और 2 घंटे का टाइम भी डिसाइड कर पाएंगे, या आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे. एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज 5561 में हुई होगी, या 11,000 में हुई होगी, या 7,000 में. या तो एग्जैक्ट है या नहीं है. तो ये एग्जैक्ट आपको देगा कि ये चंद्र ग्रहण कार्तिक महीने का हो चुका, सूर्य ग्रहण होने वाला है. व्यास जी कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण हुआ, उसी महीने में 14वें दिन सूर्य ग्रहण आ गया. वो तो 13वें दिन कह रहे हैं. इट इज पॉसिबल ऑल्सो, बट आई हैव नॉट वर्कड ऑन दैट. देन फिर वो ये कहते हैं कि उससे पहले ये पोजीशंस आई हैं स्काई में जो बहुत डिजास्टर कॉज कर सकती हैं. इसलिए धृतराष्ट्र अगर हो सके तो वॉर होती है. वीनस इन विर्गो, वीनस है, ये वीनस है और ये विर्गो में है, और ये इज आस्पेक्टिंग पूर्व भाद्रपद है. वो यहाँ से 7th कॉन्स्टिलेशन में उसको आस्पेक्ट कर रहा है. मतलब अच्छा, फिर मैं आपको ये आस्पेक्टिंग बात समझाती हूँ, पहले दिखा दूं. मरकरी एंड केतु, मरकरी एंड केतु क्या कहते हैं? मरकरी एंड केतु भी यहाँ है. अब मरकरी वहां पे श्वेतो ग्रह है. अब कई स्कॉलर्स ने कहा अरे श्वेतो ग्रह क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये तो कोई उल्का पात होगा, कुछ होगा. श्वेतो ग्रह के एंशियंट संस्कृत में 2 ही ट्रांसलेशन है, या तो वो केतु के लिए है या मरकरी के लिए. मजेदार बात यह है कि केतु और मरकरी दोनों उस पोजीशन में है जिस पोजीशन में महाभारत ने कहा कि श्वेतो ग्रह वहां है. तो फिर बोथ सन एंड मून इन ज्येष्ठा, स्कॉर्पियस कॉन्स्टिलेशन है ना. ये सन एंड मून दे आर इन स्कॉर्पियस कॉन्स्टिलेशन, आर एफ्लिक्टिंग रोहिणी इन टॉरस, वो 7th होगा. ओके, फिर जुपिटर इज गोइंग अराउंड. अब पावक प्रभा, अरे सभी को पता है पावक प्रभा जुपिटर का साइनोनाइन है. सो व्हाई डू यू जस्ट डिस्कार्ड इट कि ये डेटेबल नहीं है? इज गोइंग अराउंड श्रावण इन ब्रह्म राशि. आई हैव समराइज्ड, बट दीज गिव position of all 7 planets vis-a-vis 16 nakshatras. That is the kind of, and I personally verified on my software that all these positions are not repeated anytime during 25,000 years prior to this date, 3,139. See what has happened. In ancient India, the astronomy was very advanced. It was very advanced, and the see,
in the modern scholars, all 4 5 of them whose dating I have read, they normally take that if the word is used कि एक उसको पीड़ियते विरोचन आक्रम में कोई भी शब्द संस्कृत ने यूज किया है, उन्होंने उसका एक ही मीनिंग लगा दिया कि वो उसी घर में बैठा। ये नहीं है, ये आपको चार्ट दिखा रही हूँ मैं। मीनिंग ऑफ द टर्म्स रिफ्लेक्टिंग लुकिंग एट बेनेवोलेंटली और इन अ मेलेवोलेंट में। कहते हैं ना, एक घर की अच्छी निगाह पड़ रही है, इस घर की बुरी निगाह पड़ रही है, ये हमारी उसमें होता है, मगर हम उसमें तो जाते नहीं, हम तो सिर्फ पोजीशन ऑफ स्टार्स और प्लेनेट में जाते हैं। तो सूर्य पुत्र इज शनि एंड परुष ग्रह इज शुक्र। ब्रह्म राशि मीन्स मास ऑफ नॉलेज विच इज मकर राशि, शाशिनी मकर राशि। नो क्या हो सकता है, सन एस्पेक्ट हाउस या राशि या कॉन्स्टलेशन को 7th पोजीशन से, मून भी वीनस भी एस्पेक्ट कर सकते हैं। सेम हाउस में नहीं होते, 7th में होने चाहिए। मार्स 4th 7th 8th से कर सकते हैं, जुपिटर 3rd 7th 9th को कर सकता है, सैटर्न 3 7th 10th को कर सकता है। तो अगर हम ये बेसिक, ये कमाल की बात ये है कि ये प्रिंसिपल आपको महाभारत से लेके आज तक अनचेंज्ड नजर आएगा इंडियन एस्ट्रोनॉमी में, एंड दिस इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर वेरी वाइड एंड ऑल कि दिस इज द पोजीशन कंटिन्यूटी ऑफ नॉलेज इन आवर हेरिटेज। अब एक डेट सेट हो गई कि 14 सितंबर, मैंने जो स्लाइड आपको पहले दिखाई वो स्काई सिमुलेशन है, 14 सितंबर 3139 BC का, और सूर्य ग्रहण से पिछला सूर्य ग्रहण से कुछ देर पहले का, पीछे हाँ, वो था सूर्य ग्रहण से कुछ देर पहले का। कार्तिक के महीने में कहते चंद्र ग्रहण हुआ, फिर उसी महीने में सूर्य ग्रहण हुआ। सूर्य ग्रहण से पहले ये पोजीशंस आ गई। कार्तिक के महीने में कृष्ण पीस मिशन पे गए, और फिर उसके बाद अगले महीने मार्गशीर्ष में वॉर के लिए डेट आ गई, दैट इज हम उसकी अमावस्या के आसपास वो शुरू होती। अब नेक्स्ट टाइम मार्कर जो इनडिस्प्यूटेबल होना चाहिए वो ये था, हम सब ने जाना है कि भीष्म पितामह शरशैया में पड़े रहे। उन्होंने कहा मैं तो प्राण का त्याग तब करूंगा जब सूर्य उत्तरायण शुरू होगा, और सूर्य वो कब थे, माघ की शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल अष्टमी को हम भीष्म अष्टमी आज तक मनाते हैं हिंदुस्तान में। मजेदार बात यह है कि महाभारत का ये करते हुए सब कुछ साइंस ने वही दिखा दिया जो हजारों साल से भारतीय बिलीव करते आए हैं। वो माघ शुक्ल अष्टमी को भीष्म अष्टमी मनाते हैं, और वो यही कहते हैं कि ये 3140 वर्ष पहले हुआ होगा, 5100 से ज्यादा पुरानी बात है, ये कहते हैं। और ये देखिए, लो एंड बिहोल्ड, और 19 दिसंबर 3139 BC सुबह जो विंटर सन इज स्टार्टिंग इट्स नॉर्थवर्ड जर्नी। नॉर्थवर्ड जर्नी का मतलब यह है कि आपको सभी को क्लियर है, आधा साल तब 180 डेज कहते थे उसको। सन पहले साउथ से नॉर्थ की तरफ आएगा ना, जब वेस्ट से ईस्ट में मूवमेंट करता है पहले तो साउथवर्ड करेगा और फिर वो नॉर्थवर्ड करेगा। नॉर्थवर्ड मूवमेंट उसकी जब शुरू होती है उसको कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस पॉइंट। तो ये आपको दिखाई देता है 19 दिसंबर 3139 BC। कमाल की बात यह है कि ये एग्जैक्ट वॉर शुरू होने के 68वें दिन और भीष्म पितामह के धराशायी होने के 58वें दिन ये दिखाई देता है, और यही महाभारत में लिखा है। इतनी प्रिसीजन है इन डेट्स में, ये है। तो अब हो गया कि 19 दिसंबर, अब भीष्म पितामह goes to the other world। अब इससे पहले वॉर तो हुई, भीष्म पितामह तो लेटे हुए हैं। वॉर कब हुई? 14 सितंबर को जब सूर्य ग्रहण लग चुका, उसके बाद वो कार्तिक का महीना है, उसके बाद रेवती नक्षत्र में कृष्ण पीस मिशन पे जाते हैं, वो फेल हो जाता है। फिर बलराम चले जाते हैं बनवास को, तीर्थ यात्रा को, वो कहते हैं मैंने युद्ध में हिस्सा नहीं लेना किसी भी साइड में। फिर उसके बाद एक्चुअली यहाँ पे एक छोटी सी बात एक्सप्लेन करने वाली है कि कृष्ण ये साफ कहते हैं कि इसी अगले महीने, अगले इसमें हम अमावस्या के टाइम जब
अमावस्या का चांद ज्येष्ठ नक्षत्र में होगा, वॉर शुरू कर दे। ये कारण से बात हो जाती है और खत्म हो जाती है। और एग्जैक्टली उस दिन वॉर शुरू हो जाती है ज्येष्ठ के। अब मार्गशीर्ष के 15 दिन निकल गए और क्योंकि पूर्णिमांत मंथ होता था और वो उस दिन वॉर शुरू हो गई। कृष्ण ने पूरा उपदेश गीता का, आप सबको पता है कि पहले दिन दिया अर्जुन को, अर्जुन ने हथियार छोड़ दिए। अब जब हथियार अर्जुन ने छोड़ दिए, उसके बाद कृष्ण उसको समझा रहे हैं। महाभारत में और हमारे जो पब्लिक ज्ञान में एक ही गैप है कि महाभारत ये नहीं कहती कि संजय सब कुछ धृतराष्ट्र के पास ही बैठे देख रहे थे। महाभारत ये कहती है कि वो युद्ध के मैदान में एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जाते थे, वहां पे युद्ध की सारी घटनाओं को देख के फिर बड़ी घटना के बाद युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को आके सब नरेट करते थे। तो महाभारत के अकॉर्डिंग मार्गशीर्ष मास की अमावस्या को जब वॉर शुरू होनी थी, अर्जुन ने हथियार छोड़ दिए, तो वहां पे संजय ने सारी गीता का ज्ञान सुना और 10 दिन और फिर देखा कि अर्जुन ने धनुष उठा लिया और युद्ध शुरू हो गया। और 10वें दिन भीष्म पितामह धराशायी हो गए। तो 10वें दिन ही धराशायी होने के बाद 11वें दिन संजय धृतराष्ट्र के पास पहुंच गए। ये लिखा हुआ है महाभारत में, सब लिखा हुआ है, हर वर्जन में लिखा हुआ है। और फिर वो उनको सारी बात सुनाते हैं। तभी तो आपको कहते हैं कि वो पूछ तो रहे हैं गीता कहाँ से शुरू होती है, पूछ रहे हैं ना धृतराष्ट्र संजय से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या हुआ वहां मेरे पुत्रों में और पांडु के पुत्रों में, तो वो रिपीट करते हैं। ये जो दुनिया के लिए फिर नॉलेज गीता का ज्ञान दिया गया सारा, ये कृष्ण ने जो दिया उसको 11वें दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 11वीं को एकादशी को दिया संजय ने धृतराष्ट्र के थ्रू वर्ल्ड को। उसको आज तक हम आप सभी को मालूम है कि इस बार भी 25 दिसंबर को हमने गीता जयंती मनाई और वो मार्गशीर्ष मंथ की शुक्ल एकादशी ही थी। इतनी प्रिसीजन है हमारी पब्लिक मेमोरी में और साइंटिफिक कोरिलेशन में, कहीं कोई एक दिन का भी गैप नहीं है। अब वॉर हो गई और फिर उसके बाद भीष्म पितामह का डिमाइस भी हो गया। फिर आप सबको मालूम है कि गंधारी ने श्राप दिया कृष्ण को कि 36 वर्ष बाद तेरी द्वारका डूब जाएगी और यादवों का सत्यानाश हो जाएगा, सब कुछ हुआ। और फिर हम ये भी मानते हैं कि 3102 बीसी में 19 फरवरी, मेरे को सुनते हुए तो ये अपनी लाइफ में 70 साल हो 50 साल हो गए कि लोग कहते हैं कि 19 फरवरी 3102 बीसी की सुबह को कलयुग शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ था? आर्यभट्ट ने भी बताया कि 7 के 7 ग्रह जो हैं वो नक्षत्रों के एंट्री पॉइंट पे आ गए। नक्षत्रों या राशियों का एंट्री पॉइंट क्या है? एरीज, और एंड पॉइंट क्या है? पाइसेस। पाइसेस से एरीज की तरफ मूव करते हैं। तो कमाल की बात ये है कि ये मैंने स्टेलेरियम का लिया। क्योंकि ये 19 फरवरी 3101 बीसी विच मीन्स हिस्टोरिकल ईयर 3102 बीसी को दिखाता है। यही स्काई व्यू सेम आपको 26 दिन पहले आपको प्लेनेटेरियम दिखा देगा डिट्टो। तो अब मैं आपको ये यहाँ जरूर बताना चाहती हूँ कि ये देखिए कि ये एरीज है। आई थिंक यू कैन सी दैट। कैन एनीवन रिस्पॉन्ड? कैन यू सी एरीज? यहाँ ब्लू नहीं, ये है, ये देखिए पाइसेस, सन के ऊपर आ गया, मध्यम दिख रहा है। मगर आप ये देखिए कि कैसे 7 के 7 ग्रह एक एंट्री एरीज के एंट्री पॉइंट पे आ गए हैं। सैटर्न, मरकरी, मार्स, सन, जुपिटर और मून, यूरेनस हमने नहीं लेना मगर ये तो दिखाएगा, सॉफ्टवेयर तो दिखाएगी। ये 7 के 7 ग्रह जो है, वीनस ये पीछे छूट गया इसके, ये 7 के 7 ग्रह एरीज के एंट्री पॉइंट पे इकट्ठे हो गए। आई ऑल्सो वांट टू ऐड कि पिछले 12,000 साल में कोई भी और दिन ये ग्रह इस तरह 7 के 7 एरीज के एंट्री पॉइंट पे नहीं आती। और इसी दिन से हम कहते हैं कि कलयुग का बिगिनिंग हुआ।